अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली अहमद है और मैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ अदारों में सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। आज का हमारा टॉपिक पोस्ट डेवलपमेंट थ्योरी है। तो आज के लेक्चर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पोस्ट डेवलपमेंट थ्योरी, जो कि डेवलपमेंट स्टडीज की बहुत क्रिटिकल और एक बहुत अहम थ्योरी है, उसको देखने की कोशिश करेंगे कि उसके जो फिलोसोफर्स और उसके जो कंट्रीब्यूटर्स हैं वो क्या समझते हैं और वो डेवलपमेंट स्टडीज को किस तरह से व्यू करते हैं और पूरे डेवलपमेंट स्टडीज को पोस्ट डेवलपमेंट थ्योरी की लेंस से कैसे समझने की कोशिश करते हैं। आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा मुख्तलिफ तस्वीरें। सो दीज आर ऑल दी पोस्ट डेवलपमेंट थ्योरी फिलोसफर्स एंड कंट्रीब्यूटर्स जिन्होंने मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर पोस्ट डेवलपमेंट थ्योरी के लिखा है। एंड सो पोस्ट डेवलपमेंट थ्योरी हमेशा से ये व्यू रखती है, जो इसके लिखने वाले हैं, जो इसके अंदर कंट्रीब्यूट करने वाले हैं, दे बिलीव दैट इट हैज ऑलवेज बीन अनजस्ट। सो इससे मुराद ये है कि जिस तरह से अभी मुल्क में आपको तरक्की का सफर नजर आ रहा है, मुख्तलिफ मुल्कों में तरक्कियों का मराहिल जो नजर आ रहे हैं, इट हैज ऑलवेज बीन अनजस्ट, नेवर वर्कड एंड दिस पॉइंट हैज क्लियरली फेल्ड। Sachs बताते हैं that a leading member of the post-development school, and I quote, the idea of development stands like a ruin in the intellectual landscape, and it is time to dismantle this mental structure. So post-development theorists, जो कि 1980 और 90 की दहाई के अंदर आपको ज़्यादा मुतवातिर जगहों के ऊपर सामने आए, जो उन्होंने अपनी राइटिंग्स के थ्रू, अपने लेक्चर्स के थ्रू ये लोगों को बावर करवाने की कोशिश की कि जो अभी करंट मॉडल जिस तरक्की के ऊपर या जिस तरह की तरक्की के ऊपर हम चल रहे हैं, ये अनइक्वल है, अनजस्ट है, और ये हमारी मुल्क और एनवायरनमेंट के लिए सूटेबल और फायदेमंद नहीं। इस वजह से हमें इस पूरे तरक्याती निज़ाम को दोबारा से रीथिंक करने की ज़रूरत है, विच ऑल्सो रिलेट्स टू आवर मेंटल स्ट्रक्चर्स एज वेल, कि जिस तरह से हम तरक्की के बारे में सोच रहे हैं, दैट इज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम जिस वजह से हमें ये तरक्की मिली है। इनके जो फेमस नाम है फिलोसोफर में, दे आर गुस्तावो, माजिद, जेम्स फर्गसन, गिलबर्ट। सो दीज आर द नोटेबल नेम्स हु हैव कंट्रीब्यूटेड टू पोस्ट डेवलपमेंट थ्योरी। अब मैं बारी बारी आपको कुछ इनके जो कंट्रीब्यूटर्स हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं, व्हाट हैज देयर concerns and what has their feedback been with regards to all the problems which relates to the development studies. So to see development as a historically produced discourse entails examination of why so many countries started to see themselves as underdeveloped. मोहांटे ने बहुत ज्यादा काम किया है द परसेप्शन ऑफ वुमेन इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इन द आईज ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज और वेस्टर्न वुमेन स्पेसिफिकली. सो ही रिफर्स टू द सेम फीचर, द सिचुएशन ऑफ हु प्रोड्यूसेस नॉलेज अबाउट थर्ड वर्ल्ड वुमेन. अब ये तीसरी दुनिया की खातून से उनकी मुराद है कि सारे जो गरीब ममालिक के अंदर जो खवातीन है, जो गरीब ममालिक के अंदर सारी खवातीन रहती हैं, उनकी परसेप्शन, उनकी नॉलेज, उनके बारे में नॉलेज, उनके बारे में आइडिया डेवलप करना, उनकी आइडेंटिटी के बारे में कौन नॉलेज बनाता है, कौन परसेप्शन क्रिएट करता है. सो अकॉर्डिंग टू हिम, इट इज द सेम वेस्टर्न वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल हु मेक्स द नॉलेज about third world women, who is often and always been unjust, and it is not the accurate description which we want to see in the world. So Mohanty discovered that women in the third world women are represented in most feminist literature on development on as having needs and problems, but very few choices and freedom. So according to Mohanty, हर वेस्टर्न लिटरेचर के अंदर आपको थर्ड वर्ल्ड कंट्री की जो खवातीन है उनके बारे में यही परसेप्शन नजर आएगी. So being third world, ignorant, poor, educated, uneducated, tradition bound, domestic, family oriented, victimized. So these are the tags and these are the connotations which are being attached with the third world women, with a negative connotation that these are all the problems which the third world women are facing. So in contrast to implicit self-representation of Western women as educated, women having control over their bodies and their sexualities and freedom to make their own decisions. तो ये वो कॉन्ट्रास्ट है जो कि आपको नजर आता है मुख्तलिफ लिटरेचर में, अंडरस्टैंडिंग में, लेबल्स में, जो कि आपको वेस्टर्न वुमेन और थर्ड वर्ल्ड खवातीन के बारे में नजर आता है. So these representations implicitly assume Western standards as the benchmark against which to measure the situation of third world women. For Mohanty,
एक प्रॉब्लम जो हमें इस चीज में समझने की जरूरत है, इस परसेप्शन से, इस तरह की लेबलिंग से, आप ये चीज हम पोर्ट्रे करते हैं कि जो स्टैंडर्ड है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की, जो गरीब ममालिक की खवातीन है, उनके लिए द ओनली स्टैंडर्ड विच एग्जिस्ट इज द वेस्टर्न वुमेन स्टैंडर्ड। जिस तरह से वेस्टर्न खवातीन चल रही हैं, पहन रही हैं, जिंदगी गुजार रही हैं, जिस तरह से अपने बारे और जिनके आइडियाज डेवलप है, जब तक उस तरह से ये थर्ड वर्ल्ड वुमेन नहीं सोचेंगी, उस तरह से नहीं अपनी तरक्की के सफर के बारे में सोचेंगी, then there is no hope for their reform. They will remain unrepresented, they will remain exploited, they will feel exploited, and that is the premise on which the current discussion about women is being made. And according to Mohanty, that is a flawed discussion, and that has this had so much intellectual flaws, जिस वजह से हमें इसको challenge करने की जरूरत है. So the paternalistic attitude on part of the Western woman and more generally perpetuation of hegemonic idea of Western superiority. So that is the idea जो कि मोहंती हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह से भी वेस्टर्न वर्ल्ड एक हेजेमोनिक आइडिया की बेसिस के ऊपर थर्ड वर्ल्ड वुमन को भी कंट्रोल करना चाह रहा है. एक और जो कंट्रीब्यूटर हैं, हिज नेम इज एडवर्ड सईद. एडवर्ड सईद के ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कि उनकी एक और लेक्चर करेंगे जिनकी उनकी किताबों के बारे में, उनकी डिस्कोर्स के बारे में, उनकी इंटेलेक्चुअल डिबेट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. लेकिन एडवर्ड सईद ने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया क्लास, दैट इज ओरिएंटलिज्म. ओरिएंटलिज्म के ऊपर हम बहुत डिटेल में भी जाएंगे, बट लेकिन क्योंकि आज हमारा टॉपिक सिर्फ पोस्ट डेवलपमेंट थ्योरी को बेसिक इंट्रोडक्शन समझ है, इस वजह से मैं बस आपको ब्रीफली बता दूं that according to Edward Said, Orientalism can be discussed and analyzed as corporate institution for dealing with the Orient. So by making statement about authorizing use of it, describing it, teaching it, ruling over it. So in short, Orientalism as a Western style of dominating, restructuring and having authority over the Orient. जिसके अंदर ओरिएंट वो आपका सारा खिता है जो कि अंडर डेवलप्ड है, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, बिकॉज एडवर्ड सईद ने अपनी किताब के अंदर इस चीज का हवाला दिया है कि ओरिएंट हमारा वो है जो गरीब ममालिक हैं जनरली एंड स्पेसिफिकली मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज. सो जब हम उनको बयान करते हैं, टीच करते हैं, अगर आप एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ मैप उनके बारे में ड्रॉ कर रहे हैं कि वो लोग इस तरह ही होते हैं, हमेशा ऊंटों पे बैठे रहते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं होती, जाहिल होते हैं. तो जब बार बार आप ये मुख्तलिफ किताबों में, फिल्मों में, ड्रामों में, अपनी एकेडमिक डिबेट्स के अंदर ओवर एंड ओवर मेंशन करेंगे, तो जो आम अवामुन नास की भी परसेप्शन है, दैट विल आल्सो बी रिफ्लेक्टेड विद दोज अंडरस्टैंडिंग. सो ये ओरिएंटलिज्म है. अब ये मैं आपको बहुत बहुत कम टाइम की किल्लत की वजह से ज्यादा एक्सप्लेन कर नहीं पा रहा, लेकिन विल मेक अ सेपरेट लेक्चर ऑन दिस, बट फॉर नाउ दिस इज द आइडिया बिहाइंड ओरिएंटलिज्म. And then Vandana Shiva talks about the hierarchy of different types of knowledge. That we have local knowledge subordinate, not only economic but also cultural subordination. So expansion of ethnocentrism, Western fashion styles and behavior patterns is also dominating the entire world. जिस वजह से ना सिर्फ आपको इकोनॉमिक डोमिनेंस फील करनी पड़ी है, बल्कि कल्चरल डोमिनेंस भी और कल्चरल सबऑर्डिनेशन भी फील करनी पड़ती है, जो कि अभी वेस्टर्न वर्ल्ड एग्जर्ट कर रहा है मुख्तलिफ ममालिक पे. So Vandana Shiva is talking and researching about these aspects of the development and the post-development area, जिसके ऊपर उन्होंने मुख्तलिफ रिसर्च की और अभी भी क्लास जो मुख्तलिफ आइडियाज हैं, मुख्तलिफ थ्योरीज हैं, they are still being discussed, they are still being researched upon further. और ये क्योंकि 1980 और 90 की दहाई के अंदर ये पोस्ट डेवलपमेंट थ्योरी आई है, so this is a relatively new theory, and that is why their philosopher, their contributors are still very much, majority of them are alive, they are contributing, they regularly write on the subject. So class, अब मैं अपना लेक्चर यहाँ पे खत्म करूंगा. आपको कोई भी फर्दर सवाल हो तो आप चैट बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. आई विल मेक श्योर कि मैं आपके सवालों का रीजनेबल जवाब दे सकूं. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज.